Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hi guys. In this video, I will let you know about how to download a bibliographical tool named Zotero. ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये Zotero जो है ना ये एक bibliographical tool सॉफ्टवेयर है और इसी से हम मुख्तलिफ स्टाइल में बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आ जाएगी। तरीकाकार ये है कि आज की वीडियो में हम डाउनलोड कर पाएंगे कि ज़ोटेरो को कैसे डाउनलोड करते हैं और ये इस्तेमाल कैसे होती है, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो द फर्स्ट स्टेप टू डाउनलोड अ ज़ोटेरो सॉफ्टवेयर, go to google.com, okay, and just search download Zotero. Download Zotero. So you will find download Zotero on www.zotero.org. Just click on it. You will find two things here. Just remember कि एक है Zotero connector और एक है Zotero 6 for Windows. ये 6 वर्जन है, तो आपने दोनों को इंस्टॉल करना ताकि आपको जो है ना ये मुख्तलिफ लिनक्स 32 बिट के लिए, मैकोस के लिए और connector for other browser as well. So you will just download Zotero, click on this button, and this will automatically start. Okay, and you can also click on this button, install Firefox connector. Okay, so both are completed now. Continue to installation and add. Click on add button. So it will connect automatically. When you search anything, you will get it download and you will find your desired article in a sequence, and you can easily create bibliography in different style like APA, MLA, Chicago, etc. So these are various tools for bibliographical tools and research, reference citations, and the notes, footnotes, and different citation tools. I hope you might enjoy this video. I also suggest you to subscribe this channel for more informative video. Thank you so much. May God bless you all. Thank you so much once again.